My first organization, which has started in the year 1997, went IPO in the year 2005. Most Yeah. employers believe that more than 50% of the graduating students are not even employable. Forget employment. Today, when in a world where the Google knows everything, there is no premium for just knowing something. IITs and IIMs are great places to go to, but they are better places to be from. The millennials, the Gen Z, Gen Y, Gen whatever it is, they all have started looking at education very differently. As per one published report, only 51.25% graduates in India deemed employable. Not only this, even the placement statistics of IITs, IIMs, IIITs are declining. What are some work integrated programs that you can consider to make yourself employable? So these are some questions that needs to be answered. And our guest today is Shantanu Rooj. So let's welcome. He is the founder and CEO of TeamLease EdTech. Hi Shantanu, I welcome you to the Crazy Careers podcast. It is an absolute honor to have you here. So, before we get into the actual conversation, would you mind introducing yourself and what exactly you do? I've been an entrepreneur for the last about 25 years now. Started multiple organizations, largely around education. My first organization, which has started in the year 1997, went IPO in the year 2005. Post which I started Mhm. my second organization, which was an IT services company, which was working with schools, colleges, and universities to offer ERP solutions in a SaaS model. That company got acquired in the year 2009, and then I started my current organization, TeamLease EdTech. I'm the founder and the CEO of this organization, managed largely finance, marketing, sales, and strategy. Right, right. So, आपका एक vision है to make India employable. Yeah. So, how are you going to achieve it? So look at the problem first, right? Indian education has been plagued with several challenges, and this is just not an India problem. This is largely a global problem. If you see, in the world has produced more graduates in the last 35 years than the 800 years before that. Most Yeah. employers believe that more than 50% of the graduating students are not even employable. Forget employment. Employable means that even if you want to employ them, you can't employ them, right? The education system hasn't innovated itself over the last few decades. So the curriculum, the pedagogy, the style of teaching, the alignment to the industry, all of these have been challenges all this while. If you see today, the youth is getting frustrated with degrees which can't get them jobs as much as employers are getting frustrated with the candidates who do not fit into the job roles. I think this is where we feel the challenges. There have been many experiments. Government of India ने NSDC के through कई सारे training centers चालू किए. Lot of organizations have tried to create their corporate universities. There are training interventions. There are skill centers. So many interventions have been tried, but we have started figuring out that this is something which is not becoming adequate. That's none of these are becoming enough to make sure that every student who graduates from one of the colleges or universities ultimately have a job the day they graduate. That guarantee is lacking, right? More so in general degree programs than the professional degree programs. कुछ दिनों से तो IIT में भी challenges चालू हो गए. So we realize Right. that if you have to do this at scale, and if you have to make a real big impact into the higher education of India and ensure that it reaches to the outcome, which is largely employability, TeamLease EdTech decided that this is a great opportunity for innovation and some sort of a intervention. And we started working with thousands of employers on one side, tens of universities on the other side, and started creating programs at the intersection, which we believe can make a huge impact into the landscape of higher education in this country. So there are news all over the internet कि IITs and IIM graduates के पास भी job नहीं है. So why the placement statistics are declining in IITs and IIMs? ये आज का सिर्फ अकेले का प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक ये प्रॉब्लम इसके कई सारे मायने हैं. पहली बात है, आज से करीब 20 साल पहले की बात देखें, जब हम लोग आईआईटी से पास आउट हो रहे थे, उस समय इंडिया में सिर्फ 6 ही आईआईटीज थी.
कुछ 2,500 बच्चे उसमें से पास आउट करते थे. So normally, if you see the demand and supply situation, there were so many thousands of employers who were vying to take an IIT graduate, right? But at the other Mm-hmm. side, there are only 2,500 such students available. That's one side. Today, there are more than about what? There are about 25, 30 IITs available today. There are so many triple ITs available today. There are so many NITs available today. One side, it is great for the country because you have so many high quality graduates coming out, but it also creates a abundance of such engineers available in the market. इतने सारे Yeah. इंजीनियर्स हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो क्रेज है, उसकी जो डिमांड है, वो थोड़ी कम दिखती है इस समय. एक तो पहला प्रॉब्लम ये. दूसरा प्रॉब्लम है Right. कि ट्रेडिशनली सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स का एक ड्रीम जॉब हुआ करता था, या तो किसी ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म में चले जाएं, या इंडिया के आईटी फर्म्स के अंदर एक नौकरी लग जाए. Mm-hmm. बच्चा चाहे सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हो, बट उसे जॉब तो इन्फोसिस या टीसीएस में ही चाहिए. अगर इस प्रॉब्लम और इस साल करंटली अगर हम ग्लोबल फिनोमेनन को देखें, तो आईटी इंडस्ट्री इज नॉर्मली गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ चैलेंज, राइट? सो दे आर नॉट हायरिंग मच बिकॉज ऑफ द geopolitical situation, slowing down of the IT demand in the US markets, and its own other problems. आईटी इंडस्ट्री ज्यादा हायर नहीं कर रही है, बहुत सारे इंजीनियर्स अवेलेबल हैं और सबको आईटी में ही जाना है. इसके कारण एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम चालू हो गई है. हमने कई बार बताया कि अगर एक तो ये प्रॉब्लम हो गया मार्केट की तरफ से. दूसरा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आईआईटीज में, खासकर नए जनरेशन आईआईटीज में, अगर आप देखेंगे जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो इट हैज बीन लार्जली अराउंड थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट एंड थियोरिटिकल नॉलेज. Today, when in a world where the Google knows everything, there is no premium for just knowing something. You should know how to Mm. apply that knowledge. It's important to know how to become more productive and resilience from an employer perspective. ये सब चीजें करनी है, then the student has to have a lot of hands-on experience. उसे project work, internship, apprenticeship, on the job learning, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो बहुत सारे आईआईटीज नहीं कर रहे हैं. तो कुछ प्रॉब्लम्स आईआईटीज के अंदर हैं, जो खासकर नए आईआईटीज में जहां एक्सपेरिमेंटेशन कम हो रही है. दूसरी तरफ कुछ Right. प्रॉब्लम एम्प्लॉयर की तरफ से है, जहां मार्केट अभी आईटी में ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है. उस कुछ प्रॉब्लम तो हमारे सबके क्रिएटेड हैं, जो कि हर बच्चे को आईटी में ही जाना है. अगर एक सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा सिविल इंजीनियरिंग टाइप जॉब्स ढूंढना चालू करें, मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, देयर इज enough and abundant jobs available there. Manufacturing in India, the infrastructure in India, all of these are growing at a rapid pace, and there is a lot of demand for engineers there. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जाना चाहे, जहां पर इंडिया में सेमी कंडक्टर्स, मोबाइल फोन्स, इस तरह के कई सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, मुझे लगता है नौकरी की कमी नहीं होगी. तीन तरह प्रॉब्लम है. कुछ प्रॉब्लम आईआईटीज के अंदर, कुछ प्रॉब्लम एम्प्लॉयर्स में, कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के खुद के क्रिएटेड है. मुझे लगता है एक टेम्पररी फिनोमेनन है, ये कुछ सालों में ये सेटअप हो जाएगा. या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सबको एसी में बैठ के काम करना है, नोबडी वांट्स टू डू दैट फील्ड जॉब या फिर फैक्ट्रीज में जाके काम करना Correct, correct, correct. I think है. that's a big challenge, and people will have to stand up to reality. You yourself is a graduate from IIT and IIM both. So how does it feel to be an IITian and also having a degree from IIM as well? So, अगर आप देखें, IITs and IIMs are great places to go to, but they are better places to be from. मतलब ये है कि आईआईटी में जाकर मैं कितना पढ़ा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आईआईटीएन हूँ, right? IITs and IIMs gives you 2 3 great advantages. Number one, the advantage of the brand. The fact that you are an IITian or a graduate from IIM just tells you that you are of a great quality. That improves your signaling value. Number two, see the what is different inside this premier institutions is the fact that you get to network with a lot of people, right? So Yeah. जिस तरह के स्टूडेंट्स के साथ आप, जिस तरह के पीयर्स के साथ आप पढ़ाई करते हैं, जो नेटवर्क आपकी क्रिएट होती है, वो फ्यूचर लाइफ में जाकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आज के दिन में अगर आप देखें, हमारे मेरे जितने भी पीयर्स रहे होंगे वो इंस्टीट्यूशंस में, वो सारे किसी न किसी कंपनी में टॉप जॉब पे रहेंगे. तो उससे आपका जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो बहुत ही वैल्यूबल होता है. Third thing that these institutions do very innovatively is to promote the concept of peer learning.
जो केस स्टडीज हम डिस्कस करते हैं, जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, दोज आर द थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट इन दिस इंस्टीट्यूशंस, which ultimately improves the signaling value of these institutions there. I think that's where the biggest advantage is when you go to the institutions. राइट। एक कॉन्सेप्ट है, वो एक मिसकॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कि आईआईटीएम्स और आईआईएम ग्रेजुएट्स अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनको फंडिंग जल्दी मिल जाता है कंपेयर टू अदर फाउंडर्स। इसके बारे में आपका क्या कहना So, yeah, this was true a few years back. It's not true anymore. एक तो है? कुछ तो एडवांटेज डेफिनेटली है, मैं मानूं या ना मानूं, कि क्योंकि जो बच्चे आईआईटी से निकलते हैं, आईआईएम से निकलते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये सोचना होता है, शायद कुछ हद तक सही भी हो, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस या हार्डवर्क या परसिवियरेंस का डेमोन्स्ट्रेट किया है। क्योंकि आज के दिन में अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है तो वो करीब करीब 2% बच्चे आउट ऑफ lakhs and lakhs of kids who ultimately get into IITs. Who are these people? People who have shown lot of rigor, lot of hard work, lot of perseverance, and have ultimately showed that competitive spirit, right? So ये तो पक्का है कि इन बच्चों में ये चीज बहुत ज्यादा है। अगर कहीं मुसीबत का टाइम हो जाए, कभी डिफिकल्ट टाइम हो जाए, ये बच्चे भागेंगे नहीं, ये लड़ते रहेंगे लास्ट तक। सो इट शोकेसेस दैट, नंबर वन। नंबर टू, इट ऑल्सो शोकेसेस दैट दिस किड्स possibly are slightly more sharper than the other kids who could not get through. That's one of the benchmarks that a lot of investors use. And third is that these kids will also bring the benefit of network of their faculty members, network of their own peers, which will हेल्प देम बिकम मोर सक्सेसफुल। आई थिंक ये कुछ एडवांटेजेस हैं इन बच्चों में जिसके कारण उन्हें फंडिंग मिलने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन अगर आज आप देखें, इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग मोर एडवेंचरस, दे आर विलिंग टू फंड पीपल हु, even if you're not from IIT and IIM, as long as you can showcase the passion for that particular uh, industry products or service that you want to offer, and if you have a great business model and start creating great team, they're willing to take risk on you. राइट। So, you have been speaking and writing extensively about your vision of University 4.0. We have heard about Industry 2.0, but what is this University 4.0, the future of higher education? See, we have been saying that Dr. Pankaj Chandra from Ahmedabad University wrote this book called Building Universities That Matter. And उन्होंने उसमें कहा है कि एडुकेशन के तीन फंडामेंटल एंड रिजल्ट्स होते हैं। एक, टू मेक ग्रेट सिटीजन्स फॉर द कंट्री, पीपल हु आर एडुकेटेड हैव अ मच हायर सोशल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कुछ लोगों को पढ़ाई करने की इच्छा होती है, टू quench their thirst for knowledge, that's number two. The third one, which is one of the most important ones, is to help people make their careers and earn their livelihoods. The first and the second are very difficult to measure, but the third one, which is about employability, about being able to earn their livelihood, employers are sure that the education system has not yielded the type of results that it should have done, right? We believe that the future of education is going to have a multiple life forms, but the format of education is something which is always on the go, online, on site, on the job, multilateral, multimodal, multilingual, crowdsourced, gamified. It's going to be a very different type of a system where learning सिर्फ टीचर्स से नहीं होगी, सिर्फ टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम सुन रहे हैं, वो नहीं होगी। लर्निंग इज गोइंग टू बी इन द एयर, लर्निंग इज गोइंग टू बी पीयर टू पीयर, लर्निंग इज गोइंग टू बी क्राउड सोर्स, लर्निंग इज गोइंग टू गेमिफाइड। आज के दिन में नॉलेज हर जगह है, आप कहीं भी देखें, कहीं किसी, आप मोबाइल फोन पे देखें आपके पास नॉलेज है, अगर लैपटॉप पे देखें आपका नॉलेज है, किसी और से बात करें नॉलेज है, इंस्टा पे जाएं उस पर नॉलेज है। नॉलेज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एप्लीकेबिलिटी के प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि एजुकेशन विल हैव टू स्टार्ट चेंजिंग नाउ। आई मीन हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल यूज्ड टू, आई थिंक दैट हैज टू चेंज। वी बिलीव दैट अगर हम किसी इंस्टीट्यूशंस को मेजर करते हैं, आज के दिन में भी अगर आप देखें कि कोई कॉलेज या कोई स्कूल बहुत अच्छा होता है बिकॉज दे आर मेजर्ड ऑन देयर इनपुट्स, टीचर्स सैलरीज, टीचर्स क्वालिफिकेशंस, उनके बिल्डिंग्स कैसी हैं, कैंपस कैसी है। आई थिंक दैट हैज टू चेंज टू आउटकम्स। कौन सी इंस्टीट्यूट ज्यादा आउटकम अच्छा ऑफर करती है? Differentiation and personalization are absolutely necessary now, and institutions will have to start thinking about that differently. It is not just about making things easier for the learner, but it has to make sure that learning becomes accessible by tapping into the motivation and abilities of the learner. We believe, for example, assessments, examination have to shift from annual examinations to regular feedback. It's important to realize that
Teachers just knowing the content is not the same as their ability to deliver teaching inside a classroom. जानना किसी चीज को और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है. Time tables are an industrial era model. It doesn't work anymore today. Today, the world requires flexibility where every learner wants to study, learn at their own pace at the time which actually suits them. That's what is important. I think lifelong learning will need a continuum between prepare, repair and upgrade. आज से 10-20 साल पहले की बात करें, उस समय क्या होता था कि हम जैसे हमारे समय की बात करें, अगर हम एक बार ग्रेजुएट हो गए, अगर हमने एमबीए की डिग्री पा ली तो हम अपनी पूरी लाइफ की अर्निंग उससे कर सकते हैं. बट आज के जमाने में इट रिक्वायर्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यू. आप हमेशा, हर दिन, हर साल, हर वक्त एक नया स्किल सीखने की जरूरत है. आई थिंक सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And universities of the future, institutions of the future, will have to reimagine themselves and have to deliver outcome, have to become flexible, have to become multimodal, where they have to create a system where a student doesn't need to enroll for a 3-year degree together. I can go to institutions, learn a small chunk of program, earn a few credits, go out, go back to the organization, work for a few quarters, and come back and learn something more. And as I start learning, I accumulate credits. One day I say I have 120 credits, go to a university, say that I would just want a graduation degree. I think people will have to imagine this differently. The world is evolving. The millennials, the Gen Z, Gen Y, Gen whatever it is, they all have started looking at education very differently. Education सिर्फ कॉलेज में जाकर, सिर्फ स्कूल्स में जाकर नहीं होता. Education is just in the air. In the future, if institutions do not understand this, do not understand the changing requirements of the industry and the learner, they'll all become a chapters in history. That's what our understanding is. And that's how we foresee the future of education, which we call University 4.0. राइट. तो अगर हम देखें इंजीनियरिंग में तो हमारे कोर ब्रांचेस थे जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांच भी आ रहे हैं. तो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप और पिलर फॉर आई मीन making students employable for the future generation? Absolutely, absolutely. This is fantastic because देखिए आज के दिन में the world is becoming more uncertain today, right? So if you talk to any CEO and they may not admit it publicly, but everybody will tell you that nobody has an idea how the industry is going to look 5 years from now. आज से 2 साल पहले किसने सोचा था Gen AI is going to disrupt so many things, right? Nobody knew that. I mean today. Gen AI is almost like an operating system. Everybody uses ChatGPT for something or the other. Now, if in 5 years from now, the way the robotization is going, the way automation is happening, the way AI is becoming intelligent, you can all start thinking about it and you at least know the pace and the direction in which industry is moving. But nobody knows where you're going to land 5 years from now. If you do not know what the industry is going to be 5 years from now, how do you recruit people today who will fit those job roles 5 years from now? Nobody has an idea. So the only best thing that you can do is to take a lot of kids, a lot of people who have multiple skill sets and multilateral. They're trained in multiple things and can fit into multiple job roles. कल के दिन में सेल्स का जॉब खत्म हो गया, टेली सेल्स का जॉब, और मान लीजिए रोबोट्स ने ले लिया. दिस पर्सन फिट्स इनटू कस्टमर केयर बिकॉज द पर्सन अंडरस्टैंड्स मेनी थिंग्स. I think employers are looking at adaptability. And adaptability will come only when the student or the learner has learned multiple things, mostly things which fits their own interest. Ultimately, the concept of multidisciplinary degree is exactly that. While you are studying engineering, if you are interested, you can pick up an art subject. You can pick up a psychology subject, for example, and employers are looking at great combination of skills. Today, a lot of employers in the IT industry, for example, tells me that a developer, a UI UX developer who has understanding of psychology is a great combination. बिकॉज एक तरफ आपको टूल्स यूज करना आता है, दूसरी तरफ आप कंज्यूमर्स के माइंड में जाकर देख सकते हो उसे चाहिए क्या. ये दोनों समझ में आ जाए तो आपके जो डिजाइन होंगे वो सबसे अच्छी होंगी, राइट. आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट जस्ट अंडरस्टैंडिंग one's format of learning gives you a unilateral understanding of the world. Whereas if you become multidisciplinary, you have understanding of the world and you are more adaptable. I think kids who have started picking this up
are more resilient, and hence they have more chances of success in the future. And hence a lot of time when I go to campuses and college students have asked me, Shantanu, which skill program should I take up, which courses मैं कर लूं जिससे फायदा होगा. He said that there is no right answer for this. जिसमें आपको अच्छा लगता है ना उसी को कर लो. रोज जाकर सुबह टेड खोलो, एक 18 मिनट का एक वीडियो सुनो, किस चैप्टर पे सुनो डजेंट मैटर, विच एवर इज द वन दैट इंटरेस्ट यू. If it's psychology, it's excellent. If it's music, it's great. If it's art, it's fantastic. If it's AI, it's even better. I think pick up any subject, just keep learning, because that's where the world is going to value you. So what are some currently available work integrated programs that one should consider? So this concept of work integrated learning is something that we brought out 3-4 years back, and we are proud to say that we are the father or the parents of this particular program. We started telling students that just learning from one classroom, which is the physical classroom जहाँ आप जाके पढ़ाई करते हो, या the online classroom जहाँ पे पढ़ाई करते हो, that is not going to be sufficient in times to come. That future looks for a blended format of learning where at least two classrooms are involved. ऑनलाइन प्लस ऑन द जॉब. जो आप थियरी में पढ़ रहे हैं उसे जाकर प्रैक्टिकली ऑन द जॉब प्रैक्टिस करें. अगर आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा ऑनलाइन मिलाएं, जिसमें जाकर आप वर्ल्ड ओवर के डिफरेंट प्रोफेसर्स के लेक्चर सुन सकें और थोड़ा सा इंटर्नशिप से प्रैक्टिस कर सकें. आज आप जर्नलिज्म के वर्ल्ड में बात करें, दो कैंडिडेट्स आपके पास नौकरी के लिए आते हैं, राइट. एक वो आता है जो एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन डिग्री लेकर आता है, they were all valued till about yesterday. दूसरा ये आता है जो कि ऑनलाइन से शायद उसने बैचलर इन कम्युनिकेशन मास जर्नलिज्म कर रखा है, बट they have interned with Bennett and Coleman for 3 years time. Now if those two candidates comes and sit in front of you, you ask yourself who's the candidate who will pick up, right? The candidate who has worked, who has um, who has interned with that employer will showcase more higher productivity, right? They will showcase that is a काम आता है. The future is going to value the concept of work, ensuring that every single degree has got a component of on-job learning. जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ एक सेमेस्टर, एक साल, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं 3 साल की पढ़ाई के साथ 3 साल की इंटर्नशिप करना जरूरी है. आज हमारे पास कुछ 82,000 किड्स, 82,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि डिग्रीज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, और एट द सेम टाइम दे आर डूइंग अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप विद एन एम्प्लॉयर. ऑल दिस किड्स आर लर्निंग बाय डूइंग, राइट. नंबर वन. नंबर टू, दे आर लर्निंग वाइल दे आर अर्निंग अ स्टाइपेंड एवरी मंथ. इनको 9,000 से 15,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलता है. एंड थर्ड, दे आर लर्निंग विद अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयर सिग्नलिंग वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. ये सारे बच्चे जिस दिन वो ग्रेजुएट होंगे, दे विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अ जॉब दैट इज ग्रेजुएट. We started working with the thousands of employers to create this innovative work integrated degree programs. And today, we are proud to say that we have multiple such programs available. With the BFSI sector, हमने वर्क इंटीग्रेटेड बीकॉम एंड वर्क इंटीग्रेटेड बीबीए क्रिएट किया है, जिसमें स्टूडेंट बीकॉम करते करते किसी न किसी कंपनी में अकाउंटेंट का या अकाउंटेंसी इंटर्न का पोजीशन मिल जाएगा उसे, गारंटीड. एंड ही विल इंश्योर दैट थियरी वो क्लासरूम से सीखेगा, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल जाकर एम्प्लॉयर से सीखेगा. And BBA in BFSI will ensure that he's learning the theory from the university, the practical hands-on skill from a NBFC bank or a microfinance company. दोनों तरफ से कर रहे होंगे. We have created BSc in mechatronics, जिसमें बच्चा BSc का थियरी पढ़ेगा इंस्टीट्यूशन से और प्रैक्टिकल स्किल सीखेगा किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर. We have started creating BBA in retail, again university plus a big retail giant. BBA in automotive mechatronics, university plus an automotive employer. I think we have started creating about 17-18 different industries के साथ collaborate करके हमने courses create किए हैं. These are not just this is just a starting point. Every alternate month we are going to new employers, asking them to partner with one of the partner universities of ours and co-create a program so that you can manufacture employees who you exactly need. राइट. अगर आपको जिस तरह के एम्प्लॉय चाहिए, आपको चाहिए कि उसे ये सारे कोर्सेज पता होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इस तरह के हैंड्स ऑन स्किल्स होना चाहिए. यूनिवर्सिटी इज सेइंग दैट आई वांट टू पार्टनर विथ यू टू क्रिएट दिस टाइप प्रोग्राम्स. Yeah, so that's what we have created. 17 industries, all the programs available on our portal called digivarsity.com. Right. So it is very essential for employer side also to have a mechanism or hiring system
जिसमें कि आप बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी को टाई अप करवा रहे हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, सॉरी या एम्प्लॉयर्स के साथ। तो yeah, that's what I mean. Changing the curriculum and everything is one thing, but then apart from that, there should be a hiring mechanism also at the employer side. तो वो मतलब what is your plan towards reaching out to more and more employers and doing the time? सी इसको इसको इस प्रॉब्लम को दो तरह से देखें। एक तो सी यूनिवर्सिटीज के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो एम्प्लॉयर्स तक रीच कर पाए, बिकॉज कितने एम्प्लॉयर्स के पास आप जाएंगे, 100 150 200, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप यू नीड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स अगर यूनिवर्सिटीज जाएं, किसके पास जाएं? इंडिया में 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, 55,000 कॉलेजेस हैं, किसके किसके पास जाएंगे आप? So you need service providers like TeamLease EdTech who sits at the intersection doing this matchmaking. All this while, the system never worked. Actually, all of us have spoken about industry academia collaboration. It has never worked because you know together join hands to co-create a program, co-parent a program. तब जाकर सक्सेस मिलेगी। दिस वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आर प्रोग्राम विच आर को-पेरेंटेड। यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर ने मिलकर सिलेबस बनाया। यूनिवर्सिटीज उसके 60% का पढ़ाई यूनिवर्सिटीज कराती है, 40% एम्प्लॉयर कराता है, राइट? जब असेसमेंट होता है 60% मार्क्स कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ थियरी असेसमेंट्स, 40% मार्क्स कम्स बिकॉज एम्प्लॉयर्स गिव्स फीडबैक। So student के scorecard looks very different now, and employers are guaranteed that ये बच्चा अगर ये सीख कर आएगा जो मैं चाहता हूं, it actually ensures that I get ready-made employees. I do not have to retrain them. आज के दिन में प्रॉब्लम यही है, एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि यार ग्रेजुएट्स लो, 6 महीने तक फिर से पढ़ाना पड़ेगा इनको, तब जाके एम्प्लॉयबल होते हैं। बट इस कंडीशन में जिस दिन बच्चा एग्जिट करता है यूनिवर्सिटी, उसी दिन से एम्प्लॉयबल बन जाता है, बिकॉज ऑन द जॉब लर्निंग के थ्रू वो प्रैक्टिकल सीख चुका। Right? So employers are sure that they're willing to take candidates who they have parented. And by chance किसी employer का अगर लक खराब हुआ, वो साल अच्छा नहीं गया, there are multiple other employers in the industry who are willing to lap up these candidates who signal very high employability. Right? So हमने देखा कि ये सारे बच्चे जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम से आते हैं, they have extremely high rates of success. Extremely high. एक इंजीनियर या फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएट लाइक आर्ट्स ग्रेजुएट हो गया या फिर बीकॉम ग्रेजुएट हो गया, तो उनको मतलब वेदर दे शुड गो फॉर मास्टर्स इन देयर स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि उन्होंने इंजीनियर हो गया तो फिर उन्होंने एमटेक कर दिया, या फिर बीकॉम के बाद एमकॉम कर दिया, या फिर दे शुड गो फॉर एमबीए टू मेक देमसेल्व्स एम्प्लॉयबल। ओके, सो इसका कोई एक सही आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू एस्पायर। लेट्स मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम एन IIT or from any other good engineering college, and I want to pursue my career in engineering. I want to become a software engineer. I want to become a mechanical engineer. I want to become an aeronautics engineer. In that case, if I want to pursue my career in engineering, an MTech is a great option. That's what I should do because it showcases higher order of understanding of those technical subjects जिसमें आपने अंडरग्रेड प्रोग्राम कर रखी है। अगर आपको फाइनेंस में ही नौकरी करनी है, अगर आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड चार्ट अकाउंटेंसी टाइप का करियर बनाना है, तो आपको बीकॉम के बाद एमकॉम करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इफ यू वांट टू गो टू जनरल बिजनेस, right? If you go to general business, you want to make a career in sales, marketing, operations, logistics, right? These are generic subjects. In these times, an MBA gives you that enveloping understanding of business overall. I think depending on what your career aspirations are, you should pick up your next higher order of program in that particular case. ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे कि जॉब जनरेशन विल बी मोर इन फ्यूचर? For example, AI है या फिर any other skills that a student should have now so that they can become employable in future. Yeah. So see, देखिए इसके, as I was telling you, no CEO knows what the future holds, but so you can't prepare yourself for the future, but you can make yourself worthy of the future. कैसे करें? 2-3 चीजें हैं। अगर आप देखें, किसी आप एम्प्लॉयर्स पूछे आप एक फ्रेशर में कौन से स्किल्स ढूंढते हैं, हमें लगता है कि वो एम्प्लॉयर आज भी वही 4 स्किल ढूंढ रहा है उसके अंदर, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वो 4 चीजें वो देख रहा है, आज भी वही 4 चीज देख रहा है। तो अगर 3-4 चीजें देखें, एक डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स फॉर योरसेल्फ, कम्युनिकेशन,
लोगों से बात करना, टीम में एक साथ काम करना, एनालिटिकल थिंकिंग। बट इस चीज डेवलप कैसे करें? इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता। सॉफ्ट स्किल्स के लिए जितनी भी कोर्सेज है वो सब फालतू है, उसमें कुछ नहीं होता। आप इंग्लिश में ऐसे कोर्स कर करके इंग्लिश नहीं सीखेंगे। इंग्लिश तभी सीखेंगे जब आप लोगों से बोलना चालू करते हैं। आप टीम वर्क तब सीखेंगे जब टीम में काम करते हैं। आप अगर अपने ऑफिस के महिला एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेव करें वो तब सीखेंगे जब आप ऑफिस जाएंगे। थियरी में नहीं होता। वी बिलीव दैट ऑन द जॉब लर्निंग। अब जब भी आपको मौका मिले, जहां प्रोजेक्ट वर्क के मौका मिले, इंटर्नशिप के मौका मिले, अप्रेंटिसशिप का मौका मिले, ऑन द जॉब लर्निंग का मौका मिले, उसे लैप अप कर लीजिए। डोंट बॉदर कितना स्टाइपेंड मिलता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर वो एक्सपीरियंस करता है। आपके सीवी में अगर इतनी लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप दिखेंगी ना, हर एम्प्लॉयर विल बिकम impressed with you because they know that जब आप ऑफिस गए थे ना, you have learned a lot of soft skills। वहां जाकर आपने सीखा कि डिसिप्लिन क्या होता है, वो शोकेस करता। नंबर वन। नंबर टू, your CV has to showcase continuous learning, right? So pick up any program, doesn't matter, right? Obviously there are programs which are contextual today, things in anything to do with data, anything to do with security, anything to do with AI is contextual today. Obviously you should have an understanding of these concepts of what is data today, what is data analytics, what is AI, वो कर क्या सकता है। आपको AI कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बट चैट जीपीटी को यूज कैसे करें, आई थिंक वो भी एक स्किल है। आपको इस तरह के बेसिक स्किल्स पिकअप करनी चाहिए। बट योर सीवी हैज टू शोकेस लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ ऑन द जॉब लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड मल्टीलैटरल लर्निंग। अगर ये तीनों चीज अगर शोकेस करते हैं, आई थिंक एम्प्लॉयर्स विल गेट इम्प्रेस्ड। देयर इज वन सिचुएशन जहाँ पे कि एक स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है अलॉन्ग विद द स्टडीज, एंड देयर इज अनदर सिचुएशन a student is doing a lot of short-term certification courses. So, as an employee, I mean, as an employer. So, which one I should, which student I should consider for my company? Hands down, the person with the internship, because the person who has done just courses will have a lot of theoretical knowledge. But the person who has done internship along with the degree will showcase education and skills both. So that's what our understanding is कि future में काम से मिलेगी कामयाबी। Your CV has to showcase the evidence of work, right? आज के दिन में it's an irony, but it's true that employers are searching for work experience even from a fresher. फ्रेशर्स के अंदर में भी अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उसे कहता है यार इसे 6 महीने ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नॉट टुडे, बाद में देखते हैं, कहीं और सीख कर आओ। अगर आपके उसमें दिखता है कि कम से कम 6 महीना 1 साल आपने काम कर रखा है विद एन ऑर्गेनाइजेशन, इट शोकेसेस दैट आपको काम आता है, आपके सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर हैं, और आपको ट्रेन करने में मुझे टाइम कम लगेगा। आई थिंक एविडेंस ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन टुडे। Right. All right. It was really a great and insightful discussion and conversation with you. Thank you so much. Thank you so for much. your time. I enjoyed the conversation as much. Thank you so much for getting me here. Thank you.